Okay, we will do epigenetics. Okay. Actually, what you have in your syllabus is DNA methylation. Methyl मतलब जानते हो कोई? What is methyl? CH3. So DNA के कहीं पे on any group you are just putting a CH3 group, and after putting the CH3 group, a lot of things happen. Once you methylated DNA, it is not accessible to different enzymes like DNA polymerase for replication or transcription, or promoter में कोई transcription factors cannot bind. So basically, after methylation, you are making the DNA inaccessible. So inaccessible to transcription factors. So how does methylation express gene expression? So for example, a particular gene, when you are a baby, for example, in your embryo inside your mother's womb, we know we have got blood, which is it has got a hemoglobin. There are two chains of hemoglobin, alpha and beta. When you are an embryo, you don't have beta. You have the gene, but it is not expressed because the promoter of that gene is methylated. Promoter is the place where transcription factor binds and causes gene expression. Yeah, it is not allowed because बंद है. At the बच्चे लोग का क्या होता है? Gamma. You have alpha and gamma hemoglobin. But when the baby is born, वो gamma बंद हो जाता है and beta comes over. Because when the baby is in the womb, there is oxygen is less inside the womb. Our body, inside our body, it is 5% CO2. All our cells need carbon dioxide to survive. To give oxygen, it will burn everything inside. Oxygen is only for breathing and for electron transport chain, last step of electron transport chain to make water. The whole body requires reducing power. इसलिए you take ascorbic acid. नींबू का पानी क्यों लेते हैं? Because it gives you reducing power. So if you oxygen नहीं चाहिए, oxidative stress मतलब cigarette विगेट पीने से क्या होगा? Give an oxidative stress inside your body. Heat में क्या होता है? Oxidative stress हो जाता है. Mutagenic chemicals जो लेते हो, comes an oxidative stress. So these are not desirables. So but this gamma globin, it has got a capacity to bind to oxygen 5 times more than beta. So कुछ थोड़ा भी oxygen अगर आ गया, ये पकड़ लेता है. But when, for example, you are come outside in an oxidizing atmosphere, अगर तुम्हारा your gamma globin is not releasing the hemoglobin to the tissues, the oxygen to the tissues, फायदा क्या है? मतलब you need a hemoglobin which will bind oxygen and release oxygen to your muscles. Bind करके रखने से नहीं होगा. You need to release it. So that वो shut off हो जाता है and beta comes in. So at that time beta का methylation चला जाता है. What gets methylated? Gamma. So some people with sickle cell anemia, जिनका मतलब beta globin में there is a problem, genetic defect, जिसके कारण blood becomes sickle cell, they can't bind to hemoglobin, oxygen. For them, it is many people are trying to demethylize the gamma. ताकि बीटा नहीं आया तो गामा कम से कम आ जाए, कुछ तो होगा काम. जीरो से तो नहीं मामा से काना मामा अच्छा है ना. Something is better than nothing. So they can at least survive. इतना they cannot become sportsmen, but they can survive. तो चल फिर पाएंगे. इनके पास thalassemia, sickle cell anemia, जिसमें बीटा ग्लोबिन का प्रॉब्लम. So this is basically DNA methylation. So अभी what is the process of DNA methylation? और कहाँ और एक जगह पे होता है. That is, we have got DNA in our cells in the nucleus, organized as chromosomes. These chromosomes are bound to proteins known as histones and forms nucleosomes. So methylation and demethylation, it is responsible. Now histone पे अगर bind हो गया, then any transcription factors cannot come and do an expression of gene expression. क्योंकि वहाँ तो वो तो पैक है. पैक फूड कोई खा सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता. So you have to open the packing. So this methylation is for packing, acetylation is for depacking. CH3CO group आ जाता है, it is depacked. So
This is basically a part in gene expression. So let me share the slides after a bit of a background. Epigenetics. So this is epigenetics. What is epigenetics? Genetics, study of genes. How genes are propagated from mother to child, and father to child, parents to child. What is the pattern of inheritance in genetics? And epi means DNA के ऊपर में you are making changes. DNA का sequence same है, but methylation, acetylation, and all these things, they cause problems. They cause differences. सेम है, बच्चा कैसे है, तुम्हारा भी सब सेम है, लेकिन एक कुछ सम आर मिथाइलेटेड, सम आर नॉट मिथाइलेटेड, सो इट इज डिफरेंट. जीन सेम है, जीन सीक्वेंस सेम है, बट डिफरेंस क्या हो गया? मिथाइलेशन. बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड 99% of the gene is same. 99.99% rather. Only 0.1% may be different. जितना डिफरेंस आता है वो 0.1% में. Maximum difference comes from the environment. To those twins, monozygotic twins, still they are different. They are not the same. Because they are still different. दो ट्विंस है मेरे क्लास में, हम लोग के क्लास में, मेरी क्लास में एमएससी में दो स्टूडेंट्स थी, श्रेष्ठा एंड श्रेष्ठ. तो ये दो लड़कियां एकदम मोनोजाइगोटिक ट्विंस थी, एकदम सेम क्लास में पढ़ती थी, बट डिफरेंस उन लोग में था. एक ये चश्मा पहनता था, एक का आंख ठीक था. तो इसका आंख क्यों खराब हो गया, इसका ये आंख ठीक क्यों है? जेनेटिक तो नहीं है. So ये always, even if you share the same genes, it doesn't mean that you will be the same thing. You are sitting here, your twin is sitting there. दोनों का experience अलग है, location different है, you are not in the same place, अलग है. Environment, epigenetics, your lifestyle, all these things, these make an individual, not the genes. ये मेरा खून है, ये बहुत बेकार है, दूसरे का खून और तुम्हारा खून में बहुत कम फर्क है. क्योंकि if there was a difference, your insulin will be different from somebody's insulin. मेरा इंसुलिन जीन तुम्हारा इंसुलिन जीन सेम है, लेकिन मुझे डायबिटीज है क्योंकि इंसुलिन का प्रोमोटर वहां पे मिथाइलेट हो गया है. इट्स नॉट वर्किंग विद दैट एफिशिएंसी, द सेल्स आर डेड. लेकिन मेरे सब सेल्स में इंसुलिन का जीन सेम है. अगर किसी तरह उसको ऑन कर दिया गया है तो मेरा डायबिटीज चला जाएगा. They are not working, nobody is working on this in this direction. कोई रिसर्च नहीं चल रहा है, सिर्फ दवाई बेच रहे हैं. Anyway, that's a different thing. So अभी दिखाई दे रहा है epigenetics. So what is epigenetic modification? Changing in gene expression without affecting the primary DNA sequence. So primary DNA sequence ATGC जो है, it is not वो same है, we are not changing it. Like in immunoglobulins, you change it. Here you are not changing it. Okay. So these primary same hai. So these epigenetic modifications, they regulate the process during the transition from genotype to phenotype. Genotype होता gene, phenotype होता expression, protein. So बाद में होता है. So the epigenetic modifications include DNA methylation, histone modification, and microRNAs. These are epigenetics. MicroRNAs अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन DNA methylation या जितना हो सके छोटा किया उसको. ज्यादा लंबा क्लास लेना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन चला जाता है. सो ये हिस्टोन है, 4 हिस्टोन्स होता है, H2A, H2B, H3 और H4. और ये हिस्टोन का एक टेल रहता है. एंड दिस टेल्स मिथाइलेट अगर होगा तो ये हिस्टोन के ऊपर डीएनए विल कॉइल अराउंड, और एसिटाइलेट अगर होगा तो खुल जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा एंड देन द एक्सप्रेशन. बट मिथाइलेट होकर अगर बंद हो गया, कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? वो तो एक्सेसिबल नहीं है. मेरे पास पैसा है लेकिन सब लॉकर में है, लेकिन अब मैं तुमसे 10 रुपया मांग रहा हूँ, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन लॉकर में है, तुम दे नहीं पाओगे.
तो तुम्हारे पास पैसा रहते हुए भी तुम गरीब हो, बैंक में तुम्हारा पैसा जम रहा है, ठीक है जी, समथिंग लाइक दिस। और इसके पास बैंक में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन पॉकेट में 100 रुपया है, वो 10 रुपया मुझे दे दिया। अरे भाई मांगा और 10 रुपया तुरंत दे दिया, बहुत मालदार है भाई, ऐसे। तो and another thing, mRNA interference. হ্যাঁ, তারপর আমি ক্লাসে আছি, ক্লাস নিচ্ছি। এই হয়ে যাবে একটু পরে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সাইন করাতে হবে আমাকে? আচ্ছা, মানে কি একসঙ্গে, মানে কারা কারা? আচ্ছা আচ্ছা, মানে তোমরা তিনজনে আসছো? ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি আমি আছি, এই ধরো আমি ক্লাসে আছি, তবে তুমি ক্লাসে চলে আসতে পারবে আমাদের ওটিতে, সেখানেও তুমি সাইনটা করে দিতে। অনেকগুলো সাইন আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ओके। सो आरएनए इंटरफेरेंस तुमको अभी पढ़ना नहीं है, अभी दिखाई दे रहा है? कट तो नहीं गया फोन आने से? सो डीएनए मिथाइलेशन, सो दिस इज द बेस, एक बेस है, हाँ, साइटोसिन, द बेस, साइट साइटोसिन बेस, न्यूक्लिक एसिड का एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिडिन साइटोसिन, ये दिस इज द स्ट्रक्चर। ये साइट में एक CH3 ग्रुप लग गया, दिस इज एन एंजाइम। सैम होता है एस एडिनाइल मिथियोनिन, उसके साथ मिथाइल ग्रुप आता है, तो दिस मिथाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड ओवर हियर। उससे क्या हो गया? जीन एक्सप्रेशन बंद हो गया, ऑफ। ये ग्रीन आ गया मिथाइलेटेड, ये जो ब्लैक होता है इट इज मिथाइलेटेड, ऑफ, न्यूक्लियोटाइड ऑफ हो गया, और अनमिथाइलेटेड खुल गया, ऑन। ठीक है, सो ऑल जितना भी सी है, अगर इफ यू मिथाइलेट देम विथ सैम, बंद हो गया। दिस इज डीएनए मिथाइलेशन। बहुत ज्यादा मिथाइलेशन यू कॉल इट हाइपर मिथाइलेटेड, कम मिथाइलेशन हाइप, थोड़ा ना बहुत मिथाइलेशन रहता ही है, कम ज्यादा के ऊपर डिपेंड करता है। Hypomethylation is a process that leads to gene activation, oncogenes, कैंसर होता है, oncogenes, इसमें से नॉर्मल जीन्स है, प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं, दे आर नॉर्मल जीन्स, काम आता है बॉडी में, लेकिन बिकॉज ऑफ सम म्यूटाजेनिक रीजंस दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स, रिजल्ट क्या होता है? कैंसर हो गया। बहुत सारे सी बहुत सारे ऑन्कोजीन्स है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऑन्कोजीन बन गया, कैंसर हो गया। यही चीज मैं बताया, देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दे आर अनेबल, दे आर बाइंडिंग टू द प्रोमोटर एंड कॉजिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन। मिथाइलेट हो गया, बाइंड नहीं कर पाया, नो ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली इतना ही दिमाग में घुसा लो, जस्ट पिक्चर करके, जस्ट राइट व्हाटएवर आफ्टर दिस कम्स। हिस्टोन मॉडिफिकेशन तो अलग चीज है, अगर एसिटाइलेशन, ये एसिटाइल ग्रुप का होता है, लेकिन यू हैव गॉट ओनली मिथाइलेशन इन योर सिलेबस, ठीक है। सो इतना ही पढ़ना है डीएनए मिथाइलेशन। नेक्स्ट डे टुमारो भी मैं, जारका मैम तो आएगी नहीं, जारका मैम के टाइम में मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है, ओके। जारका मैम की गुड न्यूज है, हाँ, बहुत टेंशन हो गया था, प्री मैच्योर बेबी है।